The sum is there are 3 bags such that each contain 3 white, 2 black, 2 white, 4 black, 3 white, 3 black ball. Bag is selected at random and a ball is drawn from it. If it is known that a white ball is drawn, what is the probability that it is drawn from the first bag? Now this is kind of a very inverse kind of a sum. इसलिए इसको inverse probability भी कहा जाता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो मैं इसको इवेंट में डाल देती हूँ. तो हमारे पास 3 बैग है. लेट A1 बी द इवेंट दैट बैग 1 इज सिलेक्टेड, A2 बी द इवेंट दैट बैग 2 इज सिलेक्टेड, A3 is the event that bag 3 is selected, W is the event that white ball is selected, and B is the event that black ball is selected. Now they are saying that you have to select a ball and draw a bag and draw a ball from it. इसका मतलब ये हुआ कि आप बैग कोई भी इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर सकते हो. तो A1, A2, A3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेकिन उसमें से आप बॉल कौन सा ड्रॉ करते हो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बैग सिलेक्ट किया है. ओके, तो इसका मतलब व्हाइट बॉल ड्रॉ करना या ब्लैक बॉल ड्रॉ करना ये डिपेंडेंट इवेंट है, और बैग कौन सी सिलेक्ट करनी है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट होता है और फिर उससे बाद डिपेंडेंट इवेंट होता है. लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एग्जैक्टली उल्टी बात कर रहे हैं. हमको ऑलरेडी पता है कि कौन सा डिपेंडेंट इवेंट हो चुका है, और अब हम लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं कि वो कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद हुआ है. ओके, तो इसलिए ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका सब मीनिंग जो है वो उल्टा होता है. तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी. So you want probability that that a ball is drawn from the first bag when you already know that a white ball is drawn. इसको कहते हैं inverse probability. So probability of drawing a white ball is, उन्होंने बोला कि white ball तो draw हो गया है, तो what is the probability of drawing a white ball? First bag is selected and then white ball is drawn. Second bag is selected and then white ball is drawn. Third bag is selected and then white ball is drawn. The probability of drawing a white ball is, first bag is selected and then a white ball is drawn. Second bag is selected and then white ball is drawn. Third bag is selected and then white ball is drawn. This is the probability of drawing a white ball. Okay. Now you want to find out the probability that you already know that white ball is selected. You want to find out that from which bag it is selected. You already know that white ball is selected, so your N of S or your sample set is P of W. आणि त्याच्यातनं पहिल्या बॅग मधनं व्हाईट बॉल सिलेक्ट केलेला आहे. ते कसं होईल? पहिली बॅग सिलेक्ट केली आणि मग त्याच्यातनं व्हाईट बॉल सिलेक्ट केला. होल थिंग अपॉन टोटल व्हाईट बॉल सिलेक्ट केल्याची प्रोबॅबिलिटी. And now you can solve this and the answer is, I think here it will be 3/5 आणि इकडे खाली होईल 3/5 plus 5/6. So हे 3/5 राहणार 0.6 upon 0.6 plus 5/6 is 0.833. So 0.6 plus 0.833, 1.4333. 0.6 divided by 1.4333. Find out your answer. Probability आहे त्याच्यामुळे ते 0 आणि 1 च्या मध्येच राहणार आहे. It is 0.42. So 0.42 is the probability that the bag is drawn from the ball is drawn from the first bag when you already know that a white ball is drawn. या थिअरमला इनव्हर्स प्रोबॅबिलिटी थिअरम असं म्हणतात, आणि ही सगळ्यात पहिल्यांदा बेज नावाच्या एका स्टॅटिस्टिशियननी शोधली होती, म्हणून याला बेस थिअरम पण म्हणतात. ऑल्सो कॉल्ड ॲज बेस थिअरम.